Students, till now we have completed the complete embryonic development, placenta, fetal membrane, everything we have completed. Now fetus is completely developed and it is ready to be given birth. So the process of giving birth, the fetus, that is called as parturition or the childbirth. So we are just going to discuss today the childbirth. Childbirth is known as the parturition. The parturition is being originated from a Greek word that is called as parturire, that means to be in the labor. So just coming on to the point, as the embryonic development gets complete, the fetus is getting completely developed, the gestation period is over. When fully developed fetus is there, so that time fully developed fetus has to be expelled out of the female body, that is expelling out of that fetus from the female body is called as parturition or the childbirth. So what is that? After completion of the gestation period, in the previous lecture only we have seen, after completion of the 40 weeks, now the weight of the fetus is doubled, every structure is being developed properly. So at that time now fetus is ready to be taken birth, to be expelled out of the female's body. So that fully developed fetus is coming out from the female body, and that expelling out of the fetus is a result of the rigorous contraction of the uterine muscle. And you knows very well, the muscular layer of the uterus is the myometrium. So here what happens, in the myometrium a rigorous series of contraction is begun, and due to the contraction the fully developed fetus is being expelled downward so that it could be processed outward or thrown outward of the female's body. That process is called as parturition or the childbirth. So if you have to define the childbirth, if you have to define the parturition, so what is that? Act of fully developed fetus to expel out, deliver out is called as parturition or childbirth. What is the meaning of parturition or childbirth? Act of fully developed fetus to expel out. The act of fully developed fetus to expel out or deliver out is called as parturition or childbirth. Means to say, when the fetus is completely developed, fetus पूरी तरीके से develop हो गया है, वो खुद ही signal develop करेगा, and due to that signal this is now time to send out the fetus from the female's body so that the fetus could start its own journey there on. So that process is called as parturition or childbirth. So finally the most appropriate definition of that, the act of fully developed fetus to expel out or deliver out is called as childbirth or the parturition. Remember my dear child, the parturition is not only a simple process that the fetus is going to expelled out through the muscular contraction, but this muscular contraction of the uterus is a complex event that is being regulated by the neuroendocrine mechanism. Neuroendocrine mechanism से regulate होता है. Parturition is a complex mechanism that is being regulated by the neuroendocrine mechanism. Neuroendocrine mechanism means what? Neuro plus nervous, endocrine means what? Endocrine glands means the hormone. So the parturition is regulated by both nervous system and the endocrine system, because the complete parturition is being regulated by hormone, and that hormones are being working or released under the influence of the nervous system only. So this is why the parturition is a complex neuroendocrine mechanism that is being regulated by brain and the hormones both. My dear child, when fetus is going to be fully developed, that time fetus along with the placenta, remember when fetus is fully developed, जैसे ही fetus पूरी तरीके से develop हो जाता है, वो खुद ही और साथ में placenta will start a small series of the contraction or mild contraction into the uterine muscle. That mild contraction is going to work out as a fetal ejection reflex. ये क्वेश्चन कई बार आया है, what do you mean by the fetal ejection reflex? या ये पूछा जाता है कि from where do the parturition reflexes are being originated, या stimulus for the childbirth is originated from which structure. So remember, stimulus for the childbirth is being given by the fully developed fetus itself and the placenta. Two structures are there. When fully developed fetus is there, when the fetus is well grown, means the completion of the gestation period, the fetus is now doubles its weight, तो उस समय वो खुद ही generate करेगा signal. Through that signal the oxytocin level will be increased by the pituitary gland, and secondly the placenta is also participating thereon. और वो सिग्नल कैसे पता चलता है? ड्यू टू द कंप्लीशन ऑफ द gestation period. एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द gestation period, these two structures are increasing or stimulating the mild contraction of the
माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेराइन मसल, और ये दोनों एक्ट या इस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेराइन मसल से क्या होता है, फीटस इज गोइंग टू मूव आउट ऑफ द बॉडी, दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. सो व्हाट इज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में पूछा जा चुका है कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट कौन करता है, या स्टिमुलस फॉर चाइल्ड बर्थ कहाँ से शुरू होता है. तो रिमेंबर, चाइल्ड बर्थ का स्टिमुलस किससे होता है, प्लेसेंटा और फुल्ली डेवलप फीटस से. So what is fetal ejection reflex? The signal for the parturition originates from the fully developed fetus and the placenta, which induces the mild uterine contraction called as fetal ejection reflex. Is it clear? The signal for the parturition originates from the fully developed fetus and placenta. This is what again and again I am saying. सिग्नल कहाँ से मिलेगा, फुल्ली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा से, और जिसके कारण यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा. दिस इज नॉट अ रिगोरस कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज ओनली अ काइंड ऑफ माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन. ड्यू टू दैट द फीटस इज रेडी टू बी डिलीवर आउट, और इसी कॉन्ट्रैक्शन के रेफरेंस में हार्मोनल चेंजेस होंगे फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, एंड दैट हार्मोन्स आर गोइंग टू अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ. सो होता क्या है, FER डेवलप होने के बाद, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स डेवलप होने के बाद में क्या होता है, जैसे ही फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स डेवलप होता है, तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स डेवलप होने के साथ में लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज फॉल्स डाउन. FER suppresses the release of progesterone. Are you getting my point? As the fetal ejection reflex is developed, तो fetal ejection reflex डेवलप होने का मतलब क्या है कि if प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज मेंटेन कॉन्स्टेंटली हाई, तो क्या होगा, फीटस का डिटैचमेंट फ्रॉम द यूटेराइन वॉल कैन नॉट बी पॉसिबल. सो दिस इज व्हाट नाउ फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट to release out the attachment of the fetus from the uterine wall. So this is what, सबसे पहले किसको चेक करना होगा, to check the progesterone hormone. So सबसे पहले the fetal ejection reflex is going to affect on the level of progesterone, और उसके लेवल को सप्रेस करता है, FSH एक्टिविटी को दबाता है. Due to that the placenta is going to dissolve and the fetus it detaches out from the uterine wall. समझ में आ रहा है? जैसे ही fetal ejection reflex आएगा, it will suppress the activity of progesterone activity कमजोर होगी, means what, the endometrial lining will get weaker off. वो वीक होना, और वीक होने का मतलब क्या होगा, now the placenta will detach off from the uterine wall, और fetus अब uterine cavity में फ्री हो चुका है. this is what the fetal ejection reflex सबसे पहले होगा. और जैसे ये प्रोसेस होती है, ड्यू टू द माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस बिगिन, आपने देखा ही है कि fetal ejection reflex के साथ में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस होगा. So due to that mild contraction of the uterine muscles, they attack on the pituitary gland, and pituitary gland in turn will start releasing out the great quantity of the oxytocin. सो इसके थ्रू पहले तो प्रोजेस्टेरॉन को सप्रेस किया, डिटैच हुआ वहाँ से प्लेसेंटा, यूट्रस मसल में आ गया या यूट्रस में आ गया अपना फीटस, एंड एट द सेम टाइम ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा फ्रॉम द पिट्यूटरी लेयर, बिकॉज ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन विच इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस और विच इज गोइंग टू स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन इन द मायोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटेरस. Pituitary increases the secretion of oxytocin to induce the contraction in the uterine muscle, और uterine muscles कहाँ पे मिलती हैं, in the myometrium layer. So पहला प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होना, ड्यू टू द reduced level of progesterone, the placenta dissolve, fetus releases out from the uterine wall, अब उसको बाहर फेंकना है. So that for that what happened, the rigorous contraction of uterine muscles are required to induce that rigorous contraction of the uterine muscle. What is required? The requirement of oxytocin, the great level of oxytocin is required. So remember my dear child, the great level of oxytocin is being maintained here on, and that is going to induce the contraction in the myometrial lining. तो यहाँ पे आपने देख लिया कि ऑक्सीटोसिन की प्रेजेंस के कारण ही यूटेराइन मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा है. ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन the fetus will be expelled out. So that is why the oxytocin is considered as the main parturition hormone, or called as the labor hormone, because it is going to produce the labor. It is going to stimulate the process of labor or childbirth. So that is why oxytocin is the main parturition hormone. My dear child, along with the oxytocin, relaxin is also playing an important role there in the process of childbirth. Relaxin also released by the placenta and the ovary, only the pregnant ovary, not the normal ovary. Normal ovary will not release out the oxytocin, or placenta be at the end of the pregnancy only, at the time of childbirth only will start releasing out the relaxin. So my dear child, remember कितना important role है placenta का यहाँ भी in the childbirth also. So relaxin is also released by the placenta and ovary, that is only the pregnant ovary, to increase the flexibility of pubic symphysis.
To increase the flexibility of pubic symphysis, my dear students, if you knows the pelvic girdle is being fused together with the help of a joint that is called as pubic symphysis, and that pubic symphysis is a slightly movable joint, and the birth canal is lying in that region only, in the pelvic region only, and the diameter of birth canal is narrower than the size of the fetus. So to make the easy passage for the fetus, this is required that the cervical canal should dilate in the sides, should broaden in the side. So for the purpose of that, what happens, the pubic symphysis is also going to relax downward. जैसे ही वो रिलैक्स होती है तो diameter of the cervical canal will also increase, and due to that increased diameter the fetus can be expelled out. fetus आसानी से बॉडी से बाहर निकल जाएगा. तो ऑक्सीटोसिन तो मेन हार्मोन है that is going to provide the contraction to the uterine muscle, और उससे उसको एक्सपेल किया जाएगा. बट बर्थ कैनाल में जाने के टाइम पे रिलैक्सिन will work out and will relax the pubic symphysis so that the diameter of birth canal can be increased outside. So remember, oxytocin is also going to stimulate the release of prostaglandin. आपको याद होगा when we were learning about the male reproductive system, some ducts, that prostate secretion and the seminal gland secretion. The seminal gland secretion is having the prostaglandin therein, and prostaglandin is also the hormone or also the material which is going to promote the uterine contraction to suck up the semen here. और यहाँ पे वो दूसरे तरीके से काम करता है. ऑक्सीटोसिन इज आल्सो गोइंग टू रिलीज आउट द प्रोस्टाग्लैंडिन. सो प्रोस्टाग्लैंडिन इज going to stimulate the contraction of myometrial lining, and means what, the prostaglandin, oxytocin both works together to introduce the higher rate of contraction, more pace of the contraction, more rigorous contraction, so that it could easily move out, the fetus could easily move out. Let us see what will happen else after that. Dear students, if you have observed, the labor pain word is always used when the childbirth is taking place. At the time of childbirth, the female who is going to give the child birth, who is going to expel out the child, so the female has to undergo in the process of labor pain. So what is the meaning of word labor? Labor means what you know as well, the hard work. So labor is what? A forceful muscular contraction of the uterine wall. What is labor? Labor is a forceful muscular contraction of the uterine wall. Once again, contraction in the myometrium, because endometrium में तो attachment था, तो myometrium is the muscular layer and वहीं contraction हो सकता है. तो forceful muscular contraction of the uterine wall leading to the childbirth. What is labor? Labor is an act of forceful muscular contraction of the uterine wall by which the fetus is delivered out, and it causes a huge pain by which it causes the huge pain, and that pain is called as the labor pain. The pain originated during the childbirth is called as labor pain, or the pain which occurs during the labor is called as labor pain. और उस पेन का कारण क्या होता है? contraction of uterine muscle. अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है what is the reason of the labor pain, so the reason of the labor pain is the contraction of uterine muscle, एंड यूट्राइन मसल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो सर्वाइकल कैनाल पे एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, दैट इज गोइंग टू लीड आउट द पेन देयर ऑन. और ये पेन एब्डोमिनल कैविटी में शुरू होता है, एब्डोमिनल कैविटी में फील होता है, धीरे धीरे सर्वाइकल कैनाल की तरफ बढ़ता है, एंड समटाइम्स सम ऑफ द फीमेल्स आर एक्सपीरियंसिंग द पेन देयर इन द थाई रीजन आल्सो. पूरा पेल्विक गर्डल पेन में आएगा, सर्वाइकल कैनाल में पेन फील होगा, एब्डोमिनल कैविटी विल फील द पेन. सो ऑल दिस एक्टिविटी इज बीइंग कॉज्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द रिगोरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम दैट इज गोइंग टू क्रिएट द एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द सर्वाइकल कैनाल टू गिव बर्थ टू द यंग फीटस. नाउ जब जन्म होना होता है तो उस समय क्या होता है, ये पहले से सारी तैयारियां शुरू हो चुकी होती है. तो जस्ट बिफोर द चाइल्ड बर्थ, before 2 weeks of the childbirth, prior 2 weeks prior to the childbirth, fetus is moving its head downward. fetus कुछ इस तरीके से सेटल हो जाता है कि उसका सिर नीचे की तरफ आ जाता है. मतलब the head of the fetus is downward, means what, toward the vaginal canal or toward the birth canal or cervical canal. So before 2 weeks prior to the childbirth, fetus settles its head downward in the pelvic cavity की तरफ, क्योंकि साइज बढ़ चुका होता है, यूटेरस की मैक्सिमम कैपेसिटी फुल हो चुकी
चुकी होती है. So now this is the time to deliver it out. So at that time fetus is getting ready for delivering out और वो सिग्नल देना शुरू करता है by settling its head downward into the pelvic cavity. अब पूरी की पूरी पार्ट्यूरेशन की प्रोसेस को अपन 3 फेजेस में बांट सकते हैं. द कंप्लीट पार्ट्यूरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 स्टेजेस, 3 फेजेस. द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज फेज ऑफ डायलेशन और फर्स्ट फेज. फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज कहते हैं, और हर फेज में अपना अपना एक पर्टिकुलर इवेंट होता है. द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज द डायलेशन फेज. डायलेशन फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज दैट इज लास्ट टिल 12 आवर्स. कुछ घंटों से लेके, कुछ मिनटों से लेके 12 घंटे तक की फेज हो सकती है. द डायलेशन फेज लास्ट अप टू द 12 आवर्स एंड दैट फेज इज नोन फॉर द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन. और जो ऊपर से टॉप ऑफ द यूटेरस रीजन से शुरू होता है और सर्वाइकल रीजन की तरफ चलता है. यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए डायलेशन फेज जानी जाती है ड्यू टू the uterine contraction will begin from the top region and will run toward the bottom region into the cervical canal. और ये कॉन्ट्रैक्शन रिपीटेड एपिसोड में होता है. आफ्टर एवरी 30 मिनट द वन एपिसोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज देयर एंड दैट इज गोइंग टू जनरेट अ काइंड ऑफ लेबर पेन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आफ्टर ईच एंड एवरी 30 मिनट्स टिल 12 आवर्स, ज़्यादा 12 घंटे का, और इससे ज़्यादा होता है तो दैट मे बी अ काइंड ऑफ केस ऑफ कंसिडरेशन. So uterine contraction will begin to expel out of the fetus and the contraction series will begin from top to the bottom, means from the top part of the uterus to the cervical canal because fetus has to be expelled downward, move downward. और ये contraction की series episodic होती है. after 30 minute each episode is being repeated. After each and every 30 minute episode of the contraction is being repeated. So what will happen? Due to that rigorous contraction, due to the series of contraction, due to the episodes of contraction, the fetus will start moving downward toward the cervical canal. Are you getting my point? ड्यू टू द रेगुलस एपिसोड ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन. और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, द पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, the strength of contraction is also getting increased. So due to that what happens, the pressure on the cervical canal is increased, that create the huge pain also, and the cervical canal is fully dilated due to the with the help of relaxin and due to the dilation of the pubic symphysis or relaxation of the pubic symphysis. तो क्या हुआ यहाँ पे? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण फीटस डाउनवर्ड मूव करना शुरू करता है एंड सर्वाइकल कैनाल फुल्ली डायलेट हो जाती है. द फेज ऑफ डायलेशन, फीटल कैनाल इज कंप्लीटली डायलेट, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फेज ऑफ डायलेशन. सर्विक्स डायलेशन जैसे ही होगा, सो इट इंक्रीज द स्टिमुलस फॉर द ऑक्सीटोसिन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एज द सर्वाइकल कैनाल इज डायलेट, it is going to stimulate the release of more and more oxytocin. My dear child, if you have remember, oxytocin is the only hormone which is working on the positive feedback mechanism. How much the rate of reaction is demanded, that much amount of oxytocin is required. और यहाँ पे क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा पेन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन चाहिए. So to stimulate out such kind of the contraction, more and more amount of oxytocin is demanded. और ये काम किसके थ्रू होता है? Through the expansion of vaginal canal only, through the expansion of cervical canal only, and due to that expansion they are going to stimulate the release of more and more oxytocin. ज़्यादा से ज़्यादा oxytocin, ज़्यादा से ज़्यादा contraction, and that contraction is going to strengthen, going to be powerful again and again to expel out the fetus therein. और fetus अब आ जाता है कहाँ पे? In the बर्थ कैनाल, इन द वेजाइनल कैनाल, इन द सर्वाइकल कैनाल. और इसी समय प्रेशर इतना ज़्यादा आता है फीटस के ऊपर कि द एमनियन एंड कोरियन, द फीटल मेम्ब्रेन्स इन विच द फीटस इज बीइंग इनक्लोज, द फीटल मेम्ब्रेन्स आर गेटिंग blasted, getting degenerated, getting rupture. So rupturing of the fetus membrane and basically amnion and chorion. और amnion के rupture होने का सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है, the amnion is being amnion is the membrane which encircling a cavity, a pond, the aquarium that is filled with the amniotic fluid. So as the amnion is getting ruptured out, so what will happen? That fluid is going to released out in the birth canal and will provide a lubrication for the easy movement of the fetus or the child into the birth canal. So समझ में आ रहा है? Rupturing of amnion and chorion will be there, and due to rupturing what will happen? Amniotic fluid will lubricate out the birth canal. So
after the dilation of cervical canal, bursting of or rupturing of the amnion and chorion, the fetus is moving into the birth canal and lubrication is continuous there, and this is what the first phase of the dilation, where cervical canal is dilates to move the fetus ahead into the birth canal. So this is what the first phase over. Now second phase is called as the expulsion phase. The second phase begins, that is called as expulsion phase. ये एक्सपल्सन फेज 20 मिनट से लेके 1 घंटे तक का हो सकता है. द एक्सपल्सन फेज में लास्ट अप टू 1 आवर, that may vary from 20 minutes to the 1 hour depending upon the various situations. And remember, at that time more stronger uterine muscle contraction is demanded. जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा uterine muscle का contraction होगा, abdomen में contraction शुरू होगा, due to the forceful abdominal contraction, uterine contraction, fetus is finally expelled out of the birth canal. ध्यान रहे, head will come out first, not the limbs. रिमेंबर, ड्यू टू द रिगोरस कॉन्ट्रैक्शन, अभी जस्ट हमने देखा था ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता चला जाता है टू इंट्रोड्यूस द मोर कॉन्ट्रैक्शन. ड्यू टू द रिगोरस कॉन्ट्रैक्शन व्हाट विल हैपन, fetus will expelled out finally from the birth canal. And remember, first part which comes out from the birth canal is the head. Okay, और यहाँ पे भी ध्यान रखने की बात है, initially the head is having flexibly or slightly movable joint. The bones of the heads are having slightly movable joint, and this slightly movable joint is very much helpful in the process of childbirth. नहीं तो इस सक्री कैनाल से this is impossible to move out. तो head की bones में भी movement होता है. Due to that movement the fetus can easily took birth or can move out from the बर्थ कैनाल. ओके, जैसे ही बर्थ हो जाता है, जैसे ही जन्म होगा, अम्बेलिकल कार्ड साथ साथ में बाहर आती है. तो दो डिफरेंट पॉइंट के बीच में द अम्बेलिकल कार्ड इज बीइंग लाइगेटेड एंड लेटर ऑन दैट 2 पॉइंट्स आर इन बिटवीन दोज 2 पॉइंट द अम्बेलिकल कार्ड इज बीइंग कटेड डाउन और उसको एक क्लिपर लगा के बंद कर दिया जाता है. सो द अम्बेलिकल कार्ड लाइगेटेड एट 2 डिफरेंट पॉइंट विच कम्स आउट विद द फीटस एंड फाइनली कटेड इन बिटवीन द 2 पॉइंट्स वेयर इट हैज बीन लाइगेटेड. तो जैसे ही अम्बेलिकल कार्ड को लाइगेट करते हैं, चाइल्ड बर्थ होता है, द चाइल्ड कम्स इन द न्यू वर्ल्ड दैट or at that time this is called as newborn baby or the infants. And my dear student, remember, जैसे ही child birth होता है, this is needed, this is required, the child should cry over. Because of the crying the ventilation of lung is going to start. So first of all the lung ventilation will start. Due to the crying process the infant's lung expand and begin breathing और अपनी खुद की सांस लेना शुरू करता है. Till now the fetus is depending upon the mother's body for the exchange of gases, and here just after childbirth it has to learn how to exchange the gases. So that first of all the expansion of the lung, opening of the lung is required. So this is what crying is, the first event by which it can take the air in and drops out the air. So by this what happen, it is going to start functioning or start breathing. Just after that it has to start working the circulatory system. इसका circulatory system पूरी तरीके से काम करना शुरू करेगा. Circulation activity will start, जिसमें हार्ट की पंपिंग, ब्लड फ्लो, एवरीथिंग विल स्टार्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स ऑफ द चाइल्ड बर्थ. सो ये हो गया आपका सेकेंड फेज इज ओवर व्हेन फीटस इज कमिंग आउट. फीटस बाहर आ चुका होता है, यहाँ पे प्लस अम्बेलिकल कार्ड बाहर आ चुका है, उसको काट के बांध दिया गया है. फीटस का लंग काम करना शुरू कर चुका है, वेंटिलेशन होना शुरू हो गया उसमें, एंड द इन्फेंट सर्कुलेटरी सिस्टम इज एक्टिवेटेड. लास्ट फेज होता है प्लेसेंटल स्टेज. इसको आफ्टर बर्थ स्टेज भी कहते हैं. थर्ड स्टेज है प्लेसेंटल स्टेज, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द आफ्टर बर्थ स्टेज. 10 से 15 मिनट की फेज होती है, कभी कभार ये लंबा फेज होता है, तो दैट विल मैक्सिमम रीच टू द 45 मिनट. इस समय यूटरस पूरी तरीके से श्रिंक हो जाता है. द कंप्लीट श्रिंकेज ऑफ द यूटरस इज देयर, एंड ड्यू टू द श्रिंकेज ऑफ यूटरस वॉट एवर द मटेरियल इज प्रेजेंट इन द यूटरस दैट इज बीइंग एक्सपेल्ड आउट. दैट मीन्स द प्लेसेंटा, द डेसिडुआ and other materials remaining part of the fetal membranes all are being expelled out. ये सारे मटेरियल जो बाद में बाहर आते हैं इन सबको आफ्टर बर्थ कहा जाता है. दैट इज वाई दिस स्टेज इज कॉल्ड एज आफ्टर बर्थ स्टेज. सो एक्सपेलिंग आउट ऑफ द प्लेसेंटा, दैट इज डेसिडुआ, वी नोज वेरी वेल, एंड रिमेन्स ऑफ द अम्बेलिकल कार्ड, ये सब के सब बाहर आ जाएंगे. नाउ यूटरस विल ट्राई टू रिटेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन, और उसके लिए भी रिलैक्सिन हार्मोन की आवश्यकता पड़ेगी. सम मोर पॉइंट्स आई विश टू क्लियर यू.
Remember, note is there means what? These are the additional point and that are very important points. So more contraction of the uterus under the influence of estrogen, my dear child. Estrogen is also going to introduce or stimulate the process of contraction. More contraction of the uterus under the influence of estrogen close the cervix to prevent the excessive bleeding. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है कि आफ्टर द चाइल्ड बर्थ बिकॉज द कंप्लीट एंडोमेट्रियल लाइनिंग इज बिंग श्रेडेड ऑफ, सो दैट विल कॉज द ह्यूज ब्लीडिंग. हमने देखा था डेसिडुअस प्लेसेंटा के केस में यही होता था. सो दैट ब्लीडिंग मे बी हार्मफुल फॉर द फीमेल्स दोज हु आर गिविंग बर्थ टू द यंग वन. सो फॉर दैट, टू स्टॉप द एक्सेसिव ब्लीडिंग, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करके सर्वाइकल कैनाल को बंद कर दिया जाता है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन. तो वंस अगेन द इंपॉर्टेंट हार्मोन इज दैट इज एस्ट्रोजन. Or uterus is going to achieve its normal non-pregnant condition within 28 to 35 days. This is only an estimation. किसी में ज़्यादा डैमेज होता है तो that will take the more time. और जब तक वो डैमेज रिपेयर नहीं हो जाता तब तक next menstruation will not begin. Remember, okay? Labor can be artificially induced. हाँ, ये important question है for the NEET examination. The labor can be artificially induced by the injection of oxytocin because oxytocin is the labor hormone. Sometimes the females are not having the labor नहीं होगा तो the female cannot force out the fetus outside. So the gynecologists are administering the injection or they are injecting the oxytocin so that it could produce the labor there in the female. और कभी कभार लेबर को प्रोड्यूस करने के लिए वेजाइनल इंसर्शन किया जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए. तो ये दो कंपोनेंट है दैट कैन बी आर्टिफिशियली यूज फॉर आर्टिफिशियल stimulation of the labor, that is oxytocin injection and the vaginal insertion of the prostaglandin. ठीक है, so is it clear? One more point, cesarean, you knows very well. Nowadays most of the deliveries are occurs by the cesarean process. Sometimes the females are not having the labor pain and they don't wish to undergo in the process of the labor pain because that is a kind of painful process. So they are going to they are undergoing in the process of cesarean delivery, surgical delivery of the fetus, where there is no need to expel the fetus there into the vaginal canal or the birth canal. So that time this is demanded. And sometime what happens, the unusual conditions appears when the female is not experiencing labor pain, fetus is ready to give birth or fetus कहीं birth canal में फंस गया. So that time this is very much dangerous. So that time gynecologist is also taking the decision whether cesarean is applicable or not. So if cesarean is necessary, that time the superficial cut is being made on the abdominal region so that the fetus can be taken out from that region only. Okay, last point, that placenta fire. The placenta fire means what? The extreme level of the hormones, extreme level of the placental hormones at the time of childbirth is called as placenta fire. What is placenta fire? The extreme level of the placental hormone at the time of childbirth, that is called as placenta fire, and that is being caused by CRH, corticotrophin releasing hormone. What is placenta fire? Placenta fire is the extreme level of the placental hormone at the time of childbirth. This is caused by the corticotrophin releasing hormone. So this is all about the parturition, childbirth. The child has been taken birth, नई दुनिया में आ चुका है, उसने जीना शुरू कर दिया है. Everything has been established already there on. ब्रीदिंग शुरू हो चुकी, सर्कुलेशन शुरू हो चुका है, एवरीथिंग इज नाउ वेल प्रिपेयर्ड. नाउ जस्ट आफ्टर टेकिंग बर्थ उसको सबसे पहले ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की. सो फॉर न्यूट्रिशन इट हैज़ टू डिपेंड ऑन द ब्रेस्ट फीडिंग, इट हैज़ टू डिपेंड ऑन द मिल्क वॉट एवर इज बींग प्रिपेयर्ड बाई द मदर्स बॉडी ओनली. सो वी आर जस्ट मूविंग ऑन टू द प्रोसेस आफ्टर चाइल्ड बर्थ, हाउ द मिल्क इज बींग रिलीज्ड आउटसाइड. सो मूविंग ऑन टू द टॉपिक दैट इज लैक्टेशन. सो lactation word is originated from a Greek word that is lactere. Lactere means the suckling down. Suckling means what? When the newborn baby is suckling the nipples of the mothers. So that is called as suckling. So why this is referred as, why the word lactation is being used, we'll understand in the lecture only. What is lactation? Lactation is not only the process of production of milk, but production and release of the milk from the mammary gland is called as lactation. Remember, production and release of the milk from the mammary gland after the childbirth is called as lactation. What is lactation? The production and release of the milk after childbirth from the mammary gland is called as lactation. Remember,
आपको याद है पहले से ही कि द ब्रेस्ट इज प्रॉपरली डेवलप्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. इन्होंने फिजिकल डेवलपमेंट ब्रेस्ट का कर दिया था. वी हैव सीन द कंप्लीट स्ट्रक्चर, alveoli, alveolar duct, lactiferous duct, lactiferous sinus, ampulla, everything we have seen. So due to the high level of progesterone and estrogen, the physical development of mammary gland is being completed during the pregnancy period only, but at that time they are fails to प्रोड्यूस द मिल्क. रिमेंबर क्यों होता है, अगर कभी कारण पूछा जाता है इन द नीट एंड द हायर क्वेश्चंस आर देयर कि वाई ड्यूरिंग द नॉन प्रेग्नेंट फीमेल और वाई नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स आर नॉट एबल टू रिलीज आउट द milk, because in non-pregnant female the level of progesterone and estrogen is very much high, and the high level of progesterone and estrogen is going to suppress the activity of prolactin, which is the milk releasing hormone and synthesizing hormone. So remember, high level of progesterone and estrogen are going to work against the prolactin, and prolactin will work only in the low level of the progesterone. So progesterone और estrogen mammary gland का development तो करा सकते हैं, physical development हो सकता है, but they are not able to perform the functionality or the functionality of the breast or the mammary gland thereon, and the mammary glands will be functional under the presence of prolactin, the milk formation, milk synthesizing hormone. So okay, so is it clear? So high level of these hormones suppresses the level of prolactin. Due to that, the non-pregnant females are not able to release out the milk thereon. So here, after the childbirth, what happen? You knows very well, the progesterone estrogen level gets suppressed down. Due to the suppression of the progesterone and estrogen level, the prolactin level is going to increase, and the prolactin is going to release out, or prolactin is going to stimulate the mammary gland to synthesize and secrete out the milk. The secretion of the milk or formation of the milk is being taking place there in the alveoli. You knows very well. So after childbirth, the prolactin stimulate the milk secretion by suppressing the progesterone and estrogen. The suckling of the newborn stimulate the lactation process, but the stimulus for the formation and release of milk will be given only after the suckling of newborn baby. So this is why the process is called as lactation, lactare, to suckle down. So suckling of the newborn, ये question भी आता है कि how does the from where does the stimulus of releasing of milk or lactation is being received. So lactation का stimulus कहाँ से मिलता है? From the suckling of the newborn babies. Here milk, जैसे ही suckling की process होगी, milk will synthesize there in the alveoli of the mammary gland, and that is released under the effect of oxytocin. ये आप पहले से जानते हो. Oxytocin wherever the muscle contraction is required. So after the storage into the lactiferous sinus, lactiferous ampulla, we knows very well. तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही वो साइनस में स्टोर होगा, दैट टाइम एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग आउट, व्हेन द suckling of the newborn will be there, the oxytocin will work on the muscles of the mammary gland, contract the muscles of the mammary gland, and will start releasing out the milk. So that is why oxytocin is called as what? Milk ejecting hormone. So release of milk will under the influence of oxytocin. Oxytocin is considered as the milk ejecting hormone. So process of releasing of the milk is called as milk letdown or milk releasing. So this is what, so formation prolactin के अंडर में होगा, prolactin के इन्फ्लुएंस में होगा, और prolactin कब काम करेगा? when the progesterone and estrogen level is reduced. नॉन प्रेग्नेंट में क्यों मिल्क का फॉर्मेशन नहीं होता? ड्यू टू द लो लेवल ऑफ द प्रोलैक्टिन एंड हाई लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन. ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं. ओके, और मिल्क रिलीज किसके इन्फ्लुएंस में होगा? ऑक्सीटोसिन के. तो फॉर्मेशन, प्रोलैक्टिन इज मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन इज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क लेट डाउन हार्मोन. रिमेंबर वन मोर पॉइंट, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम जस्ट गोइंग टू से हियर. द ब्रेस्ट फीडिंग इज अ वे टू चेक द प्रेगनेंसी. जब तक ब्रेस्ट फीडिंग होती है तब तक देयर इज लेस चांसेस ऑफ डेवलपिंग द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ प्रेगनेंसी, नेक्स्ट कॉन्सेप्शन कैन नॉट बी टेकन, रेयर चांसेस ऑफ दैट, because the prolactin is going to inhibit the LH and FSH. Prolactin is going to inhibit the action of prolactin is going to inhibit the action of FSH and LH. मतलब फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा. अगर फॉलिकल का डेवलपमेंट भी हो जाता है तो रिलीज ऑफ फॉलिकल नहीं होगा, मतलब नेक्स्ट एपिसोड ऑफ फर्टिलाइजेशन विल नॉट बी देयर. Hence menstrual cycle is also being suspended in the breastfeeding female. So remember, this is what the lactation. Few more points about the lactation that we have to see. After childbirth, when the newborn is going to suckle down the mammary gland of the mother, breast of the mother,
nipples of the mother. So at that time the mother is going to release out the milk. So for first 2-3 days of the childbirth, the mother is not going to release out the milk. Instead it is going to release out the foremilk. That foremilk is called as colostrum. Very important question is there, very important question, and get ready for the question in your final examination. Colostrum is very important question. So after the childbirth, for first 2-3 days, mother is not going to release out the milk. Instead it is going to release out the foremilk or colostrum. What is colostrum? Colostrum is not the pure milk, that is thick yellowish liquid which is rich in the protein. It is thick yellowish liquid which is rich in the protein. So after childbirth, first 2-3 days, mother breast is going to release out the thick yellowish high protein fluid that is called as colostrum or the foremilk. This is rich in lactoalbumin and lactoprotein. Why this is very much important? Because the newborn baby is not having any kind of the defense mechanism in their body against any kind of the infection. So that time this colostrum is going to transfer or shift the antibodies from the mother's body to the fetus. ये question कई बार आ चुका है कि what is the importance of colostrum, why the colostrum is important to the newborn babies, या न्यूबॉर्न बेबीज में इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है. तो उसके लिए हमेशा आंसर ये रखना है, द इम्यूनिटी इज बीइंग provided from the colostrum. The colostrum is going to provide the antibodies. Okay, is it clear? So colostrum is going to provide the antibodies to the fetus, to the newborn infant, so that it could be saved from the many of the infections thereon. एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, कोलोस्ट्रम इज वर्किंग एज एन लैक्सेटिव. द लैक्सेटिव का फंक्शन ये होता है कि इट इज गोइंग टू रिमूव आउट ऑफ द फीटल वेस्ट वॉट एवर इज प्रेजेंट इनसाइड द इंटेस्टाइन ऑफ द न्यूबॉर्न और इन्फेंट. सो कोलोस्ट्रम इज वर्किंग एज लैक्सेटिव सो दैट इट कुड रिलीज आउट द फीटल वेस्ट दैट इज नोन एज मेकोनियम प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन. कंपोजिशन ऑफ मिल्क पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग. हियर वंस अगेन द प्रोटीन इज प्रेजेंट देयर इन कैसीन, लैक्टोएल्ब्यूमिन. फैट बहुत कम होता है. शुगर के फॉर्म में लैक्टोज प्रेजेंट होगा. विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे, साल्ट होंगे. डेली सिक्रीशन, डेली अमाउंट होता है 1 to 2 लीटर. बेनिफिट ऑफ द मिल्क इज नॉट नीडेड टू बी डिस्कस. आप जानते हैं दैट इज रिक्वायर फॉर द न्यूट्रिशन, दैट इज रिक्वायर फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शन सिंस द इन्फेंट्स आर नॉट हैविंग their own immune system, so they may get affected from any kind of the infectious agent. अगर वो अपन एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से, किसी एक्सटर्नल रिसोर्सेज से मिल्क प्रोवाइड करते हैं, तो दैट मे क्रिएट अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन इन द fetus. So that's why the doctors always suggesting the mothers to provide the breastfeeding only for the first 6 months to the fetus, so that the fetus could be safe from any other infection that is being present in the atmosphere. And finally, just now we have seen, due to the presence of colostrum, the milk is going to provide the immunity. And remember, colostrum is going to provide the passive immunity. A question बाद में आएगा when we learn the immune system, when we'll go through the immunity. So that time we'll once again learn the active immunity and passive immunity. और वहाँ पे हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है. The colostrum is going to provide either active immunity or passive immunity. So colostrum is going to provide the passive immunity. Okay, so this is all about the lactation and parturition. Thanks for watching.